Hello everyone, welcome back to Spider e-learning platform. So today we will learn about another indicator, that is Trix indicator. Points to be covered in this video are: what is Trix indicator, advantage of using Trix indicator, methods of using Trix indicator, and scanning stocks using Trix indicator. Now, what is Trix indicator? In simple understanding, Trix indicator moving average के moving average का moving average है. That means it is very smooth form of moving average. Commonly, it is also known as momentum indicator that filters out insignificant price movements, which means it is one of the best indicator used for identifying directional moves. The outputs of Trix indicator is much smoother due to triple smoothing of exponential moving averages used to build this indicator. The standard setting of Trix indicator is 15 for triple smooth moving average and 9 for its signal line, that is average line. Basic understanding of Trix indicator is, as I said before, it shows the directional moves of a stock. As you can see in this chart, baseline of Trix indicator is 0. So, the green line here is Trix indicator and blue line is average of Trix indicator. When the Trix crosses the 0 line in upward side, it gives a buy signal, and when it crosses the 0 line downwards, it gives a sell signal. Combination of Trix indicator with other indicators like stochastic will give out good results. For complete information of stochastic indicator, you can watch my video on stochastic indicator. Now, what are the advantages of using Trix indicator? The advantages are its excellent filtration of removing market noise and its tendency to be a leading rather than a lagging indicator. It has the ability to eliminate minor short-term cycles change in market direction as it measures difference between each bar smooth version of a price movement. Methods of using Trix indicator. The first method is zero line cross. Here, zero line acts as a base, that is center line. When Trix crosses it above, it gives a buy signal, and when Trix crosses the zero line downward, it gives a sell signal as explained earlier. Second method is average line cross. Here, average line is the average of Trix indicator, therefore it will lag behind the Trix indicator. Whenever the Trix crosses the average line from below, it gives a signal of buy order. Similarly, when the Trix crosses the average line from above, it indicates a sell order. Third method is divergence. It happens when price is moving in opposite direction with the indicator. A bullish divergence happens when the asset makes a lower low but indicator forms a higher low. Likely, a bearish divergence can happen when stock makes a higher low but indicator forms a lower high. So this was all about Trix indicator. Till now we understood what is Trix indicator, methods of using Trix indicator and its advantages. Now let's move to our software and understand how to make a query using the Trix indicator. So condition 0 here I am taking is Trix cutting averages upward. Parameter will be 20 and 20, that is Trix and average both will have a 20 period. Check on nth back bar 1. Condition 1 will be Trix is above 0 line. Check on nth back bar 1. Condition 2 will be price OHLC, that is close is greater than previous high. Close value greater than previous high. Check on nth back bar 0. Condition 3, price OHLC, green body for last n bars. Number of bars will be 1 and check on nth back bar will be 0. Similarly for selling side, condition 5 will be Trix parameter 2020, condition
Cutting averages downward. Check on nth back bar 1. Condition 6 will be tricks. Parameter 2020. Condition below zero line. Check on nth back bar 1. Condition 7 will be price OHLC. Condition will be close is greater than previous low. Close is less than previous low. Select close from here. Check on nth back bar 0. Condition 8 will be price OHLC. Red body for last n bars. Number of bars will be 1. Check on nth back bar 0. Add. Now you have to make a relation of these conditions over here. For buy side we will take C0, C1, C2 and C3. And for sell side it will be C5, C6, C7 and C8. Description: name, tricks buy and tricks sell. You can change its color from here. For buying you can take as green and for selling you can take as red. In filter conditions, I have filtered the rate as greater than 350, quantity greater than 10 lakhs and trades greater than 100. Click on the relationship button. Time frame here I have taken as daily. Select the group from here and run on historical. So यहाँ मैंने पूरा NSC run किया है. I have checked the results. Current day and previous 4 days तक it has shown no results, as this query will give you very rare results, but it will give a quality call. So directly we will check query offset as 5. So selling side पर यहाँ पे एक स्टॉक आया है, that is APL Limited. करंट कैंडल को हम स्किप करेंगे एज ये 5 days प्रीवियस का रिजल्ट है. सो यहाँ से हमें 5 कैंडल्स बैकवर्ड साइड पे काउंट करना है. 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो दिस इज द 5th कैंडल. इंडिकेशन आपको उसके प्रीवियस कैंडल पर यहाँ पर आया है, वेयर ट्रिक्स इज बिलो द जीरो लाइन. दैट मीन्स इट इज नेगेटिव. आप वैल्यू यहाँ पे चेक कर सकते हो. राइट हैंड साइड पे नीचे इसका वैल्यू -6.55 है एंड इट इज ऑल्सो कटिंग द एवरेज लाइन इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. तो जब ये कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है, दैट इज 708 के नीचे आपको जब ये दिखता है, तब आपकी यहाँ पे शॉर्ट में एंट्री बनती है. जो इसका जो सपोर्ट लेवल था वो भी इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है. लो इसने यहाँ पे आपको दिखाया है 685 का एंड करेंटली APL लिमिटेड का क्लोजिंग हुआ है 702 पर. नेक्स्ट रिजल्ट इसका आया है क्वेरी ऑफसेट 6 पर. बाइंग साइड पे स्टॉक आया है जिंदाल आयरन. करंट कैंडल यहाँ पे स्किप कर कर आपको प्रीवियस 6 कैंडल काउंट करना है. सो 6 कैंडल आपका ये हो जाता है एंड इंडिकेशन आपको उसके प्रीवियस कैंडल पर यहाँ आया है, जहाँ ट्रिक्स की वैल्यू इज ट्रिक्स इज ट्रेडिंग अबाउट द जीरो लाइन एंड वो एवरेज की लाइन को भी अपवर्ड डायरेक्शन में कट कर रहा है. ऑल्सो करंट कैंडल का हाई करंट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक किया है. सो जब करंट कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक होता है, दैट इज अराउंड 392, आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है इस कैंडल पर. जो इसका पहला टारगेट था 488 का, वो उसने यहाँ पे अचीव किया है एंड करेंटली उसने क्लोजिंग आपको दिया है 427.35 पर. मोर देन 50 पॉइंट्स का मूवमेंट जिंदाल आयरन ने यहाँ पे दिया है. ऑल्सो इसका जो टारगेट था 448 का, वो भी उसने यहाँ पे एग्जैक्ट 448 अचीव किया है.
So this is the accuracy of the query made on Trix indicator and our scanners. So अभी मैंने क्वेरी ऑफसेट 8 पे रन किया है. बाइंग साइड पे एक स्टॉक आई है GE शिप. करंट कैंडल को स्किप करके हमें 8 कैंडल तक जाना है. उसके प्रीवियस कैंडल पर आपको यह इंडिकेशन आया है वेयर ट्रिक्स इज पॉजिटिव, इट इज अबाउट द जीरो लाइन. ट्रिक्स की वैल्यू इज 4.48 एंड इट इज ऑल्सो क्रॉसिंग द एवरेज लाइन इन अपवर्ड डायरेक्शन. current candle का close is greater than previous candle's high. previous candle का high is 416, around 417 418 आपकी यहाँ पे एंट्री बनेगी. पहला टारगेट है आपका 427 का जो यहाँ पे अचीव हो गया है. नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ बनता है 479 480 का, वो भी यहाँ पे अचीव हो गया है. हाई इसने आपको 487 का दिखाया है एंड करेंटली इसने क्लोजिंग दी है 474.20 पर. So like this way you can use this query. Results बहुत ही selective आएंगे but output of that results will be the best. If you have any query regarding this video, you can contact on the given number. Also like, share the video and subscribe the channel for such more contents. Thank you for watching the video.